हाय एवरीवन, आई एम गौरव और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वन ऑफ द सिंपल सब्जेक्ट जियो हेरिटेज एंड जियो टूरिज्म. सो नेक्स्ट स्लाइड इज एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस इन जियो टूरिज्म. एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस इन जियो टूरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे सब्जेक्ट का. जीआईएस का यूज इन जियो टूरिज्म इंक्लूड करता है प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द डेस्टिनेशन जो कि फीचरिंग जियोलॉजिकल एंड नेचुरल अट्रैक्शन. जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. इट इज अ सिस्टम फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग विजुअल जियोग्राफिकल डाटा. GIS application in geotourism encompasses various use for planning, management and promotion of the destination featuring geological and natural attraction. It include identifying and mapping geological heritage site, designing geo-routes, assessing environmental impact, and managing visitor flow to ensure sustainable tourism development. The first use is identification and mapping of geological heritage site. GIS can be used to locate and map geological information, feature, and sites of interest of geotourism. It involves analyzing geological maps, satellite imagery, and other geothreat data to identify potential geotourism attraction. Our second application is geo-route designing. GIS is used to design and optimize geo-routes, which are thematic tourist routes that connect geographical and natural sites. These routes can be designed to different user or different interests like rock climbing, hiking, or geological walks. GIS helps in determining the best route, considering factors like destination, accessibility, and environmental impact. So, just like हमारे फोन में मैप होता है, उसी तरह GIS वर्क करता है. इसका काम होता है टू आइडेंटिफाई करना जियो हेरिटेज साइट्स को, रूट को ऑप्टिमाइज करना और डिजाइन करना टू इंक्रीज विजिटर. अनदर पॉइंट्स आर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. GIS का इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, लाइक बाय जियो टूरिज्म कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंट पर. दिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग डाटा ऑन लैंड यूज, vegetation cover, and wildlife population, and it helps in developing strategies to mitigate negative impacts and promote sustainable tourism practice. जो भी नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा बाय जियो टूरिज्म, उसे कैसे कम किया जाए, that is done by GIS application. Another point is visitor management. GIS helps in managing visitor flow to geotourism destination by monitoring visitor number, identify potential and optimizing accessible route. GIS का इस्तेमाल किया जा सकता है to create visitor information system like feedback or review of the visitors, and by making interactive maps and guides. Another point is tourism planning and development. GIS का इस्तेमाल किया जा सकता है for planning and development of the destination जिसमें high potential है जियो टूरिज्म का. This involve analyzing the data on tourism infrastructure, accessibility and economic impact, and it promotes sustainable development and community involvement. Another point is promotion and marketing. GIS का इस्तेमाल किया जा सकता है to create attractive maps and promote material for geotourism destination by showcasing the unique geological feature and attraction. By making websites or by making online platform, we can increase the tourism potential of geo heritage sites. अगला पॉइंट है डेस्टिनेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, GIS की मदद से हम बेटर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं ऑफ जियो टूरिज्म साइट्स, जियो हेरिटेज डेस्टिनेशन. द बेस्ट साइट फॉर लॉजिंग, एस्टेब्लिशमेंट, recreational space and infrastructure development may be found, guaranteeing a well throughout and well balanced destination. Destination planning and management. By the help of GIS हम better planning and management कर सकते हैं of geo tourism destination.
Another point is crisis management. In the case of any crisis, by the help of GIS, हम strategies create कर सकते हैं, locating areas that are vulnerable to risk and putting policies in place to lessen the effect of further emergency. Selection criteria in UNESCO. 2004 में UNESCO launched the Global Geopark Network to support, promote, and conserve the geoheritage sites, especially geoparks. Selection criteria are rooted in geological significance, cultural relevance, and sustainability development and educational potential. According to their educational potential and scientific importance and cultural importance, UNESCO select these sites as a geotourism destination. यूनेस्को डिफाइन करता है जियो हेरिटेज साइट विथ जियोलॉजिकल फीचर विथ significant scientific, educational, cultural, and aesthetic value. The selection of geoheritage site under the UNESCO Global Geopark Initiative involves multi-dimensional evolution. पहला पॉइंट है scientific significance. To be the part of UNESCO recognized geoheritage site, पहला important point आता है scientific significance. According to UNESCO, the geoheritage site must include stratigraphic sequence, fossil, geomorphological landforms, and tectonic structures. These sites must offer insights into Earth history, such as evolution, event, tectonic plates movement, or etc. Another point is integrity and conservation. जो geoheritage site है, वो well preserved होनी चाहिए and protected होनी चाहिए from degradation. There must be a demonstrated management plan for sites conservation, monitoring and protection. Third point है representativeness. जो जियो हेरिटेज साइट है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए रीजनल डाइवर्सिटीज. रीजनल जियोडाइवर्सिटी often linked to broader ecological, cultural and biological feature. Preference is given to areas that connect geology with other natural and cultural heritage. Fourth point है educational and research value. जो जियो हेरिटेज साइट है it should serve as a field laboratory for geoscience education and research. It should offer interpretative material, guided tours and educational program